Hello students, today we are going to start chapter 4 of your biology course, that is reproductive health. Okay, so till now we have seen different methods of reproduction. First chapter was that, then we saw the reproduction processes in flowering plants, then in humans. तो हमने सब कुछ देखा, starting from the reproductive organs, both male and female, and then development of ovum, sperm, that is the male gametes, and in case of plants that was egg and pollen grains, then fertilization, then embryo formation, development and all everything. So being said that a person can reproduce only when he or she is healthy, right? Health in terms of every aspect is important, be it reproductive or whatever. So reproductive health in general means, सबसे पहले दिमाग में आती है all the reproductive organs should be healthy. Okay, be it testis in case of male and ovary in case of female. ठीक है, urethra, penis, and you in case of female you get to get uterus, fallopian tube, everything. You must have heard about different problems women facing and all. A female cannot conceive, cannot reproduce because of some problem in the uterus, some problem in the fallopian tube, some problem in the ovary. Similarly, things happen in male case maybe. They cannot produce adequate amount of sperms. Even if sometimes they are producing adequate amount of sperm, they suffer from erectile dysfunction. That is, they cannot sustain the erection for intercourse. So all these kind of problems arise. So that is why it is important to maintain reproductive health also. So when it comes to reproductive health, वहाँ पे भी physical, emotional, social well-being is very important. Suppose if you are emotionally disturbed, so that time sexual activity also gets impacted. Physically, तो of course you have to be well built. Okay. Sometimes behavioral problems also comes. People get involved in other activities, like you must have heard that some people are quite excited about looking at dirty things and all. So that is behavioral problem. People who get involved in dirty stuffs, they are not reproductively matured. And the social being is also there. Sometimes you see female are particularly pressurized to reproduce, बच्चे पैदा करो ये वो. Even if the girl or the woman is not ready mentally and physically to conceive, लेकिन कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है, अभी तक बच्चे नहीं हुए, ये वो समथिंग. यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दिस थिंग्स. So these kind of things. But so that is why WHO, that is World Health Organization, defines that reproductive health is also, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, what is health? Social, mental, physical well-being. Similarly, this is also, reproductive health is also the same thing. Physically, behaviorally, socially, emotionally, you must be good. That is the condition you can reproduce. Otherwise, it is very difficult. You face lot of health issues and leading to lots of problems. ठीक है. So similarly in India also, the government led to devising different rules and regulations so that persons are reproductively mature, healthy. बहुत सारे नियम कानून बनाए. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या थे हमारे देश में. अभी क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, राइट. अर्ली मैरिज यूज टू बी देयर. शादी का एज जनरली क्या होता है, वी डिफाइन दैट 18 इज़ द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर व्हाट यू कॉल दैट मेल. बट चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होते थे. नाउ अडेज इट हैज़ रिड्यूस्ड अ लॉट. हेल्थ ऑफ मदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफॉर्मिटीज़ मीन्स प्रॉब्लम्स, जो बच्चा पैदा हुआ, सपोज करो ये अर्ली मैरिज वगैरह हुआ, तो उस समय क्या होता था, चूँकि लेडी और इवन जेंट्स दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड, तो जो बच्चे पैदा होते थे उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे. दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मिटी. देयर वाज हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, ये वाला. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था. इन्फेंट मीन्स चाइल्ड, जो नया जन्म होता है.
जन्म लेते ही उसका डेथ भी बहुत ज़्यादा हाई रेट होता था. देन देयर यूज टू बी हाई रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STDs. सो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम थे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. सो दैट इज़ वाई इट बिकेम इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट एम्फसाइज ऑन सम मेजर्स टू इंश्योर दैट पीपल आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. प्रॉब्लम्स मैंने बताया, ओवर पॉपुलेशन, अर्ली मैरिज, हेल्थ ऑफ मदर्स, डिफॉर्मिटीज़, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज दैट इज़ STDs. तो ये सब प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में बहुत ज़्यादा. ओके.